Is the project manager here on the behalf of Ram Janmabhoomi this trust. And in August, when we had visited this place, we had also spoken to him. Since then to this date, a lot of work has been done. जगदीश जी, अगस्त 5 को जब हम लोग आए थे लास्ट ईयर यहाँ पे, तब भी आपसे बात हुई थी। उस टाइम पे नींव का काम पूरा हो गया था, पर ये ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था। तो तब से लेके अब तक कितना इसमें कार्य आगे बढ़ चुका है? ये आपने जो देखा था तब तक ये प्लिंथ का काम हो चुका था। प्लिंथ के साथ में आपने जो देखा था अगस्त में, तो उसमें प्लिंथ के जो पत्थर है ये लोअर प्लिंथ के लेवल तक आए थे। अभी उसके ऊपर अपर प्लिंथ आया 4.5 फीट का। और मंदिर का काम एक्चुअली 1 जून से जो शुरू हुआ, यहाँ पे माननीय योगी जी आए थे और यहाँ पे पत्थर रख के फिर काम शुरू हो गया था। उसमें से महापीठ का काम 100% हो गया है। महापीठ का मतलब है जो ये झंडा लहरा रहा है, ये गर्भगृह का जगह है। ये गर्भगृह की जगह है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पहली एज, तो महापीठ बोलते हैं। ये महापीठ का काम 100% हो गया है। इसके बाद में अंदर की ओर जो दिखा है उसका आधा काम हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर का। और अभी 5 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2023 तक पूरा काम खत्म हो जाएगा, लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो वो डेडलाइन पूरी हो जाएगी? बात ये है, उन्होंने कहा जरूर है, लेकिन मंदिर का पूरा काम तो संभव नहीं है। जितना काम संभव है उसमें ग्राउंड फ्लोर पूरा हो जाएगा। जहाँ पे राम जी की अभी की जो मूर्ति है वहाँ पे शिफ्ट होना ये संभव है, उतना काम हम पूरा करेंगे। शिखर तक पहुंचने में देर लग सकती है। मकर संक्रांति, जो अगली मकर संक्रांति है, उस टाइम तक इस मंदिर का एक मतलब उद्घाटन हो सकता है, भले ही कंस्ट्रक्शन वर्क और चलता रहे। क्या होता है, मंदिर का जब गर्भगृह तैयार हो जाता है, उनका कहने का मतलब है कि मंदिर का गर्भगृह तैयार होगा, राम जी की मूर्ति वहाँ आएगी, वो रखने का काम हम जरूर करेंगे। मंदिर के बाकी इलाके के काम जैसे परकोटा का काम है, इसके साथ में शिखर तक का ऊपर जाके काम करना है, इलेक्ट्रिकल के काम है, वो काम चलते हैं। दर्शकों के लिए अगर एक चीज़ों को स्पष्ट करूं तो मंदिर का जो निर्माण है वो अगले मकर संक्रांति तक, इस साल के अंत तक हो जाएगा। मंदिर परिसर के अंदर जो और निर्माण कार्य है वो चलते रहेंगे और चलना उचित भी होगा, क्योंकि सब एक साथ में नहीं होगा, क्रम से होगा। तो एक एक क्रम से हम बाकी काम पूरे करेंगे। अच्छा, ये जो मंदिर के चारों तरफ में देख रहे हैं बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये रिट्रेंचमेंट वॉल है क्या? नदी का पानी कभी अंदर ना आए? ये रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। ये रिटेनिंग वॉल इसलिए है, मंदिर का जो नीचे वाला हिस्सा जो रहता है, जहाँ पे प्लिंथ बनती है, जहाँ पे नींव बनती है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए है। और ये जो है हमारा पश्चिम वाला जो इलाका है, अगर देखा जाए तो वो खाई है। तो उस खाई को आगे की लेवल तक ऊपर उठाने के लिए हमें लेवलिंग करना था। तो लेवलिंग के लिए भी है, तो नदी से पानी के बहाव से उसको प्रोटेक्ट करना एक है, और दूसरा लेवल एक साथ करना, ये दूसरा उसका काम है। अच्छा सर, ये जब मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है, फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी बन रहा है और 3 मंजिल का ये स्ट्रक्चर होगा, तो मूर्ति का डिज़ाइन, उसको लेकर के बड़ा कौतूहल है दर्शकों में, जनता के अंदर। मूर्ति के डिज़ाइन को लेकर कोई फाइनलिटी हुई, कितने फीट की मूर्ति होगी? और एक जो बात चल रही लगातार कि रामनवमी के दिन जब सूर्य उदय हो तो पहली किरण सूर्य की उसके मस्तक पे पड़े, उसके बारे में कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं आप? आज की जो राम की मूर्ति है ये चला मूर्ति बोलते हैं, ये पूजा की मूर्ति है। और ये पूजा की मूर्ति यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रहेगी। अच्छा। फिर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार होगा, जहाँ पे राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित हनुमान जी, ये सब राम दरबार के जो ये है सब इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए मूर्ति का अभी शुरू होना जो है, ये ग्राउंड फ्लोर पे ये जो मूर्ति है उसके साथ में जो राम लल्ला की मूर्ति रहेगी, केवल उसका काम अब हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके ऊपर काम करने की पद्धति, हाइट कितनी होनी चाहिए, आसन कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। प्रत्यक्ष मूर्ति शुरू होने का काम अब शुरू हो जाएगा। इसके आगे तो शुरू होने में और बनने में 6-7 महीने लग सकते हैं। तो ये बात सही है कि कुछ उसमें ऐसा साइंटिफिक कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य जब निकले तो पहले ही उसकी किरण मस्तक पे पड़े मूर्ति की? ऐसी हमारे माननीय पंतप्रधान जी जो है, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इसका एक राम, जैसे हर एक मंदिर की वैशिष्ट्य रहती है, जैसे राम जी के फोरहेड, इसके ऊपर सूर्य के किरण आ जाए। लेकिन राम नवमी पे माध्यान्ह सूर्य में राम का जन्म होता है, तो माध्यान्ह सूर्य से लाने के लिए हमने कोई एक यंत्रणा ऐसी बनाई है जहाँ की सूरज की किरणें आके सूर्य राजतिलक पेरिस्कोपिक फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसका आके यहाँ पे मंदिर में आएगी। तो ये करने की जो प्रक्रिया है, इसमें CBRI के ड्राइंग हो चुके हैं और उसके अनुसार हमने जो प्रयोग किए
वो काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। एक्चुअल मंदिर में लगाने का जो काम है मंदिर के साथ साथ होगा। अरे ये बहुत कौतूहल रहता है कि आप पहले भी हम लोग ध्यान में इतना रहना चाहिए, ये जो प्रयोग है वो रामनवमी के 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद तक सीमित है। यूं नहीं कि पूरे साल भर आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, बड़ा कौतूहल रहता है, तमाम तरह की बातें रहती हैं। हम आपने पिछली बार बोला कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि 1000 साल तक कम से कम चले, तो इसकी ये जो स्ट्रक्चरल मार्वल है इसकी कुछ खास बातों पर गौर करिए कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन यूज हुआ है। जैसे कोई लोहा नहीं यूज हुआ है इसकी बुनियाद में। इसके नीचे जो कंक्रीट हुआ है वो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, उसमें लोहा नहीं है। आरसीसी में क्या होता है, रीएनफोर्समेंट होता है, ऐसा रीएनफोर्समेंट नहीं है, ये कॉम्पैक्टेड है। दूसरा, इसके ऊपर जो ग्रेनाइट यूज़ किया है, ये ग्रेनाइट ऐसा पत्थर है कि जो पानी एब्सॉर्ब नहीं करता, इसको विदरिंग नहीं होता, इसलिए उसको माना जाता है कि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चलता है। तो ये प्रोटेक्शन में जो किया है और प्लिंथ में जो किया है, इसका मतलब है कि पूरा मंदिर का प्रोटेक्शन आना है, वो नींव के कारण आना है, तो उसकी वजह से हो जाएगा। ये पत्थर जो है ये सभी पत्थर सैंडस्टोन है, और ऐसे प्रकार के जो सैंडस्टोन होते हैं इनकी आयु 1000 साल से ज़्यादा रहती है। ये नापा गया है आज तक के अपने जो मंदिर बने हैं, जो 7वीं सदी के हैं, 8वीं सदी के, 12वीं सदी के हैं, वो इसी प्रकार के पत्थर से बनाए जाते हैं। तो ये पत्थर का इस्तेमाल किया है, इसमें भी कहीं स्टील यूज़ नहीं किया है। स्टील अगर यूज़ करते हैं तो उसका लाइफ कम होता है। तो दिस इज टोटली इन स्टील एंड आयरन फ्री टेम्पल। इट इज़ टोटली आयरन फ्री टेम्पल। टेम्पल के परिसर में ना तो नींव में है, ना कंस्ट्रक्शन में है, ना उसके कारण कोई काम ऐसे है जहाँ पे स्टील का इस्तेमाल है। परकोटे में हम बाहर की ओर स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन वॉल अलग है मंदिर से, इसलिए उसको कर रहे हैं। और ये प्रोटेक्शन के तौर पे आरसीसी रीएनफोर्समेंट कंक्रीट, ये परकोटे के बाहर जो रिटेनिंग वॉल है केवल उसमें है। आखिरी में ये जो मुझे लास्ट टाइम आपने कहा था 161 फीट 161 फीट इसकी हाइट है गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होगा, और लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी? 350 फीट है पूर्व पश्चिम, 250 फीट है दक्षिण उत्तर, और ऊंचाई है 161 फीट। और ये आखिरी में ये जो टेम्पल सामने बन रहा है बिंबा, आप अगर एक बार दिखा सकें विजुअली, ये सर इसको क्या कहेंगे, कितने % इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो मेन स्ट्रक्चर है इसका कंप्लीट हो चुका है? मंदिर का केवल आप देखते हैं तो 45% तक का काम हो चुका है। और ऊपर का जो काम है, जैसे हम ऊपर जाएंगे वो सिकुड़ता जाएगा, फिर ऊपर शिखर तक पहुंचेंगे। ये अभी 55% बाकी है, वो एक साल में हम उसमें से 40% करेंगे, और शिखर और बाकी का काम करने में और 3-4 महीने लगेंगे। So that was Mr. Jagdish, who is giving a detailed view about how this structure is being built, what are these novel aspects of this temple structure, and how steel and iron has almost not used in this construction of the main temple. It's a structure which has been designed to last for at least 1000 years, and massive arrangements are being done all around the periphery of this temple to ensure that that Saryu water never comes here. This outer huge wall will be built here, and the view is very clear that by the end of year 2023 the stage would be reached when the idols could be placed inside the garbhagriha. The construction of the garbhagriha work would be over, and that technically means that this place could be inaugurated, could be made open for common people to come here and pay their reverence to the deity. Yes, the other construction work in this huge 2.2 acres of temple corridor area, that will of course continue. With video journalist Bimbadhar, this is Pranshu Misra at the construction site of Ramlala Temple in Ayodhya for CNN News 18. All right, so our Uttar Pradesh Bureau Chief Pranshu bringing you the first visuals of the Ram Mandir in Ayodhya. Remember, you're seeing it first time on CNN News 18. He was in conversation with the project engineer over there, who gave away this big takeaway that at least the Garbh, or the so-called inner abode of the Ram temple, will be ready by 1st of January 2024, as had been declared earlier by Union Home Minister Amit Shah during his address in Tripura, when he referred to the BJP's election manifesto promise of 2019. Remember, the Ayodhya temple had featured prominently in BJP's 2019 election manifesto as well. Now, the holy town of Ayodhya, as we all know, in the politically crucial Uttar Pradesh,
has been very prominently featuring in the BJP's port promise, and in fact it's only gone on to display the BJP's prowess as far as the double engine sarkar and the unwavering support to development by the BJP government is concerned. The significance of Ayodhya has been for Prime Minister Modi's as well to showcase as part of their 2024 election promise. And those are the visuals that we are bringing to you of the Ram Temple under construction right now. And as Pranshu was highlighting, that in his conversation with the project engineer, that this is a solid construction that they are targeting, which will last for more than a century. And he also spoke about the overall architecture and how they are planning, and where the idol is to be inaugurated of Lord Ram as well. Now remember, after the landmark 2019 Supreme Court verdict, which paved the way for the construction of Ram Mandir in Ayodhya, this ended a decades-old dispute that, of course, saw a radical shift in the political landscape of the country's most populous state. Let's also go across to Pranshu, who's live with us and was also earlier in conversation with the project engineer over there. Pranshu, one takeaway, of course, was that the temple, as far as the inner abode or the garbh, will be ready by January 1st of next year. Yes, that's right. And today's day is very important. Last time we were here in August, and today's day is more about pictures, and I'll directly show you the pictures. Now, this is for the first time that we have got access here on the first floor. Last time in August when we reported, we were showing you from the ground there, which is in fact, one story below us. We were talking to the project engineer while we were having the survey of this entire area around the temple complex. Now we are on the first floor. And right in front of me, where you see that flag is fluttering, this Bhagwa triangle is fluttering, that is exactly the place where the Sanctum sanctorium is being built. And if you remember, in July last year, it was Yogi Adityanath who has done the first puja of the first Shila that was laid for the Garbha. And this is the entire complex. We are already seeing how this structure is coming up. The floor I am walking is the solid granite, compressed granite, and below me is around 50 meters and bedrock solid foundation, which is sane of any sort of use of iron or steel. Therefore, we can say that in form of the underground construction, the construction below the earth, it is a solid slab of compressed concrete which has been created, and on it this structure is starting. Now these are the pillars, the carved pillars which we have been talking about. This is the red stone which has come in from Bharatpur in Rajasthan. Beautiful carvings are already being done here, and this is the construction work that has started. Hundreds of such columns would be here, which would be supporting stories of this temple structure and also the Sanctum sanctorium. Now, talking to Mr. Jagdish and others, see, it is a huge project being constructed on around 2.2 acres of land, but this is the core area, and here the maximum 65% of construction work is over. So Mr. Amit Shah, the Union Home Minister, when on 5th he said that by the end of this year this place will be open. It is absolutely clear. The planning is that next year on Makar Sankranti, that is 15th January 2024, when the pious days of the Shubh Tithi start in the Hindu calendar, this temple should be inaugurated formally. So therefore, before the next general election, this Ram temple would be inaugurated, and therefore the construction work is at full swing. We can see lot many media persons here, and right now this is the first time we are having this access right at the spot where the Sanctum sanctorium is. Yes, back to you. Pranshu, important to also talk about how the Ram Mandir has now become an excellent example of the BJP government's double engine sarkar's development prowess, and not just that, its unwavering faith in the Hindu cause as well. Yes, that's right. In fact, the construction work on one hand and the larger messaging on the other end. We all know, as a journalist, as informed citizens, we clearly do understand that this Ram temple would be a big electoral issue ahead of 2024 general election. And already BJP is not shy of claiming and acknowledging that fact, that it is their efforts which have ensured the way for the grand Ram temple. And if you talk about Ayodhya, yes, the double engine growth phenomena which you are talking about, that clearly is helping a big time.
as far as the pace of the construction work is concerned. I have travelled through Ayodhya, and while coming to Ayodhya, the entire area which joins Ayodhya to the erstwhile town of Faizabad, around 13 kilometers, which is now being developed as Rampath, the entire area has been widened. Hundreds of shops and the residences, portions of them have been demolished in consent with the people, the residents out here, and that Rampath is being built. So the entire area of this of Ayodhya is being built, and that is possible because there is the government of a similar approach both at the state and the center. UP Chief Minister Yogi Adityanath clearly realizes that how important this project is, personally for Prime Minister Narendra Modi and also for the BJP as a political party. And taking a cue from what you say when you talk about the importance associated with the Ayodhya temple, the fact of the matter is that, the issue of Ram Mandir featured in every poll manifesto of the BJP for the Lok Sabha elections since the year 1996. And it was perhaps also an issue that they have used to counter the likes of Rahul Gandhi when we heard the Home Minister take pot shots at him during his Tripura rally. Yes, that's right. So in fact, ever since post-demolition, BJP has always said that this issue was sub judice, and therefore they always said that Ram Mandir unki aastha ka kendra hai. It is a matter of faith for them. We all know that in 2019 November, the Supreme Court cleared the way for construction of Ram Temple, but the sort of zeal, the sort of the eagerness and out of the way the efforts which have been done by the government, both the Narendra Modi government at the center, Yogi Adityanath's government here at the state, that clearly shows that how BJP has clearly tried to champion this cause of construction of Ram Temple, and the sort of efforts which have been initiated, the sort of money. In fact, it's a 1,000 crores project, and the temple which is being built, that is being built with an idea of lasting for 1,000 years, and therefore, cutting away from politics, the fact remains that this temple is going to be a construction and engineering marvel. We, when the country got independence, it was the Somnath temple in Gujarat that was, seen as a symbol of Hindu Renaissance, Hindu Punarjagran, and I think the BJP clearly wants, the RSS clearly wants that the construction of Ram Temple, when it gets open, and picture gradually, coming out forward. Today we are showing these pictures. Probably, few months down the line, there will be much more pictures to show from here. Right. So clearly, the BJP realizes that this Ram Temple can have almost similar impact as far as invoking the consciousness of the Hindu people, and ahead of election, that could clearly be a reason to celebrate for any political party, and Absolutely. therefore BJP clearly is ensuring, the governments are ensuring that this temple gets inaugurated before the next general elections in 2024. Right, and very rightly mentioned as far as the timing is concerned. In fact, we'll have to quickly